नमस्ते एवरीवन, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। क्या हाल चाल आप सबके? कैसा चल रहा है सब? कल मैं थोड़ा सा वीक था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, बदन टूटा टूटा सा एंड ऑल दैट, तो इसलिए थोड़ा कम लाइव हुआ। आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम आई थिंक आज वैशेषिका को दोबारा पढ़ सकते हैं। थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो वी कैन डिटेल आउट वैशेषिका अगेन। कल के लाइव में मुझे भी मज़ा नहीं आया था, टू बी वेरी फ्रैंक। जब हम लाइव करते हैं तो एक तरीके से मज़ा भी आना चाहिए लाइव करने के बाद, तो वो तृप्ति मिल नहीं पाई थी। तो आज हम आज के 1 घंटे में दोबारा से वही करते हैं। The Vaisheshika Sutras begin with the ostensible purpose of explaining virtues, dharmas। यानी कि वैशेषिका सूत्रास का जो ओनली पर्पस था वो धर्मास को एक्सप्लेन करना था। And dharma, according to it, is that by which prosperity, abhyudaya, and salvation, nishreyasa, are attained। यानी कि धर्म वो जिससे प्रोस्पेरिटी और सैल्वेशन, मुक्ति मिले। हमने पहले पढ़ा था कि धर्म कौन से, जो आपके सेक्स के अकॉर्डिंग है, कि आप शूद्र है, वैश्य है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उसके बेसिस पे, राइट। तो जब हम भगवत गीता में पढ़ रहे थे, भगवत गीता में भी यही था कि आप क्योंकि क्षत्रिय वंश से आते हैं, अर्जुन को बोल रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो इसलिए अभी के लिए तो आपका यही रोल है, दैट इज टू फाइट, राइट। Then it goes on to say that the validity of the Vedas depend on the fact that it leads us to prosperity and salvation। यानी कि वैलिडिटी ऑफ वेदास भी यही है कि वो हमें प्रोस्पेरिटी और सैल्वेशन, मुक्ति तक लेके जाते हैं। Then it turns back to the second sutra and says that salvation comes as a result of real knowledge produced by special excellence of dharma, of the characteristic features of the categories of substance, dravya, quality, guna, class, concept, सामान्य, पर्टिकुलरिटी, विशेषा एंड इनहेरेंस, समवाया। यानी कि उसके बाद वो अपने दूसरे सूत्र में बोलते हैं कि जो हमें मुक्ति मिलती है वो हमें ट्रू नॉलेज से ही मिलेगी। और ट्रू नॉलेज के जो भी उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, हम द्रव्य को कैसे इस्तेमाल करें, क्वालिटी क्या है, क्लास कंसेप्ट क्या है, सामान्य, पर्टिकुलरिटी, विशेष, right, and inherence, samavaya, right. The dravyas are earth, water, fire, air, ether, time, space, soul and mind. The gunas are color, taste, odor, touch, number, measure, separation, contact, disjoining, quality of being to high genus or to species. Action, karma, means upward movement और डाउनवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एटसेट्रा। तो जो स्पीशीज की हम बात करते हैं, हियर द वेल नोन क्वालिटीज ऑफ हैवीनेस, गुरुत्व, लिक्विडिटी, द्रवत्व, ऑयलीनेस, स्नेह, elasticity, संस्कार, merit, धर्म and demerit, अधर्म have been altogether omitted. These are all counted in later Vaisheshika commentaries and comments and compendiums. It must be noted that guna in Vaisheshika means qualities and not subtle reals and substances in the Sankhya Yoga. The guna in Vaisheshika would be akin to what yoga would call dharma. यानी कि जो वैशेषिका है, गुण इन वैशेषिका, वो योग धर्म करेगा, राइट। धर्म दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योगा धर्म, कि आपका क्या धर्म है उसी के अकॉर्डिंग आप योग कर रहे हैं, राइट। द थ्री कॉमन क्वालिटीज ऑफ द्रव्य, गुणा एंड कर्मा are that they are existent, non-eternal, substantive, effect, cause and possess generality and particularity. The three common qualities of dravya, guna and karma are that they are existent। एक तो वो existent है, non eternal, यानी कि वो अभी एग्जिस्टेंट है, और नॉन इटर्नल, हमेशा नहीं रहेंगे, सब्सटैंटिव, थोड़े टाइम के लिए,
इफेक्ट एंड कॉज, यानी कि इफेक्ट होगा फिर कॉज होगा, मतलब इट इज चेंजिंग। एंड पोजेस जनरलिटी एंड पर्टिकुलरिटी। जनरलिटी मतलब हर इंसान, फिर उसके अंदर पर्टिकुलरिटी, इंसान पुरुष या स्त्री, राइट। द्रव्य प्रोड्यूसेस अदर द्रव्यास एंड द गुणास अदर गुणास, यानी कि द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बना सकता है, मशीन्स। एंड गुणास अदर गुणास, यानी कि राजस might also produce rajas, right? But karma is not necessarily produced by karma, यानी कि जो आप कर्म करेंगे उससे अलग अगला कर्म हो या ना हो, दैट डज नॉट नेसेसरली प्रोड्यूस दैट। आप कर्म करते समय समभाव हो गए, कर्म करते समय अगर आप इक्वल माइंडेडनेस हो गए कि वेदर इट हैपेंस और डजंट हैपन, यू आर नॉट अटैच्ड टू दैट, देन that is why it is said, but karma is not necessarily produced by karma. Dravya does not destroy either its cause or its effect. यानी कि द्रव्य जो है वो ना ही उसका कॉज ना इफेक्ट किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर कोई चीज बनी है वो किसी कॉज से बनी होगी, वो उसका कोई पास्ट होगा, एंड देन उसके बाद इट विल हैव इट्स फ्यूचर एज वेल। Dravya possesses karma and guna and is regarded as the material. Dravya possesses karma and guna and is regarded as materials. Samavai, cause. Gunas inhere in Dravya, cannot possess further gunas. Guna inheres in the Dravya, कैन नॉट प्रोजेस फर्दर गुणास, यानी कि द्रव्य के अंदर गुण होगा लेकिन वो और गुण को नहीं बना सकता, क्योंकि गुण डिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ द्रव्य दैट यू आर। सात्विक चीज है, राजसिक चीज है, या फिर तामसिक द्रव्य है, उस बेसिस पे बोला गया, राइट। गुणास इनर इन द्रव्य, राइट। कर्मा इज डिवॉइड ऑफ गुणा, यानी कि कर्म जो आप करेंगे वो गुणा से डिवॉइड होगा, या फिर आप किस सोच से कर रहे हो उसके बाद आगे के रिजल्ट सात्विक तामसिक होंगे, लेकिन जो कर्म होगा दैट इज डिवॉइड ऑफ गुणा। कैन नॉट रिमेन एट वन टाइम इन मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक समय पे मोर देन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में नहीं रह सकता है, राइट। इनहेर्स इन द्रव्य अलोन, यानी कि वो द्रव्य के अंदर ही रहेगा। And is an independent cause of containing and disjoining. It is an independent cause of containing and disjoining. Dravya is the material cause, samavai, of derivative dravyas. द्रव्य जो है वो material cause है of derivative dravyas, guna and karma. Guna is also non-material cause, asamavai. गुण जो होगा वो नॉन मटेरियल कॉज होगा, विच इज असमवायी, of dravya, guna and karma. Karma is the general cause of contact, disjoining. Karma is the general cause of contact. यानी कि आप किस वे में कर्म कर रहे हैं वो जस्ट एक कॉन्टैक्ट है, कि अगर आप आपका एक कर्म है युद्ध लड़ना, तो आप जितने लोगों से कांटेक्ट में आता है, दैट इज द जनरल कॉज ऑफ कांटेक्ट। डिसजॉइनिंग एंड इनर्शिया इन मोशन, वेग। कर्म जैसे पानी जस्ट बह रहा है, दैट इज अ जनरल कॉज, तो वो वेग जो है दैट इज कर्म, एंड दैट इज हाउ वाटर फ्लोज। कर्म इज नॉट द कॉज ऑफ द्रव्य। कर्म किसी एक द्रव्य का कॉज नहीं हो सकता। फॉर द्रव्य में बी प्रोड्यूस्ड इवन विदाउट कर्म, यानी कि विदाउट कर्म के अकॉर्डिंग भी द्रव्य प्रोड्यूस हो सकता है। It is only when the कार्य ceases that द्रव्य is produced, यानी कि जब कोई कार्य बंद हो जाता है या फिर कार्य अपनी समाप्ति के ओर आता है, तभी कोई द्रव्य प्रोड्यूस होता है। जैसे ये चश्मा जो बना है, ये जब बन गया था तब वो कार्य सीज हो गया था, दैट वर्क वाज सीज्ड। द्रव्य is the general effect of द्रव्य। Karma is dissimilar to guna in this that it does not produce karma.
The numbers 2, 3, etc., separateness, contact, and disjoining are affected by more than one dravya. Each karma not being connected with with more than one thing is not produced by more than one thing. If karma is related to more than one thing, then with the movement of one, we should have felt that two or more things were moving. A dravya is a result of many contacts of atoms. यानी कि कोई भी एलिमेंट जो हमारे आगे बना है वो मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ऑफ एटम से बना है, यानी कि जो फोन है, जो लाइटिंग है, ये मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स है लाइट के, तभी तो दिस द्रव्य एग्जिस्ट. कॉन्टैक्ट एंड डिसजॉइनिंग इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ कर्मा. यानी कि हम किसी से कॉन्टैक्ट या किसी से बिछड़ते हैं, दैट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ कर्मा. In denying the causality of karma, it is meant that karma is not the cause of dravya and karma. अगर हम डिनाई करते हैं कि कर्म कॉज नहीं है, दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट कर्म इज नॉट, कर्म कॉज नहीं है द्रव्य का और कर्म का, राइट. It must be noted that karma in the sense is quite different from the more extensive use of karma as meritorious and vicious action, which is the cause of birth and rebirth. यानी कि इस केस में कर्म जो वो वाला कर्मा नहीं है जो हम बोलते हैं ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. इट इज द कर्म दैट वट एवर वर्क इज डन, उस वर्क को कर्मा बोला गया है इसमें. In the second chapter of the first book, Kanada first says that if there is no cause, there is no effect. Kanada अपनी फर्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर में बोलते हैं कि इफ देयर इज नो कॉज, अगर कोई कॉज नहीं होगा तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा. बट देयर मे बी कॉज इवन दो देयर मे नॉट बी द इफेक्ट. यानी कि एक कॉज तो होगा लेकिन उसका इफेक्ट अभी के तरफ नहीं नजर दिखाई देगा. जैसे बादल फटा है किसी ऊपर माउंटेन पे और उसके बाद बाढ़ आ रही है, राइट. अब बाढ़ जब आ गई उसके बाद जब हम 2 दिन बाद देखेंगे कि किसी रीजन में उसकी वजह से बाढ़ आ रही है, तो उसका कॉज तो होगा लेकिन इफेक्ट देर बाद आ रहा है, तो उस टाइम फ्रेम में द इफेक्ट इज डिलेड. ही नेक्स्ट सेज दैट जनस सामान्य एंड स्पेशल विशेष आर रिलेटिव टू द अंडरस्टैंडिंग. यानी कि सामान्य और विशेष इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग. क्या आप किस चीज को सामान्य देखते हैं, किस चीज को विशेष देखते हैं. यानी कि जिसने कभी इंसान को नहीं देखा होगा वो इंसान को देख के कहेगा हाँ ये तो विशेष है, लेकिन अगर सारे इंसान होंगे तो उनके हिसाब से वही इंसान विशेष नहीं होगा, वो सामान्य होगा. कंटेक्चुअल. Being bhav indicates continuity only and is hence only a genus. Being bhav indicates continuity. मतलब ये भाव जो है वो it indicates continuity and is hence only a genus. The universals of substance, quality and action may be both genus and species. यानी कि यूनिवर्सल्स जो हैं ऑफ सब्सटेंस, क्वालिटी एंड एक्शन मे बी बोथ जेनस एंड स्पीशीज, बट विशेषा एज कंस्टिट्यूटिंग द ultimate differences of atoms exist independent of any percipient. Hmm. In connection with this, he says that the ultimate genus is being Sat, yani ki ultimate genus jo hai, that is Sat, Parabrahm, in virtue of which things appear as existent. All other genera may only relatively be regarded as relative genera or species. यानी कि एक जो परब्रह्म सत्य है, दैट इज द ओनली जेनस दैट एग्जिस्ट एवर अराउंड. उसके अलावा इट इज ओनली द रिलेटिव जेनस ऑफ स्पीशीज दैट आर एग्जिस्टिंग. Being must be regarded as a separate category since it is different from dravya, guna and karma. इंसान को एक सेपरेट कैटेगरी में डाला गया है जो डिफरेंट है द्रव्य, गुण और कर्म के, एंड येट एग्जिस्ट इन देम एंड हैज नो जेनस और स्पीशीज. यानी कि कर्म गुण और द्रव्य में इट एग्जिस्ट इन बीइंग एग्जिस्ट, बट इट हैज नो जेनस और स्पीशीज, यानी कि उसका कोई जेनस और स्पीशीज नहीं है. It gives us the notion that something is and must be regarded as a category existing as one identical entity
in all dravya, guna, and karma. For in its universal nature, as being it has no special characteristics in the different objects in which it inheres. The specific universals of thingness, dravyatva, and qualityness, gunatva, or actionness, karmatva, are also categories which are separate from universal beings, bhava and satta. For they also have a separate genus or species and yet may be distinguished from one another. But bhav or being was the same in all. यानी कि चाहे हम द्रवत क्वालिटी की बात करें, थिंगनेस की बात करें, क्वालिटीनेस की, गुणत्व की बात करें, एक्शननेस की बात करें, कि हर एक इंसान अलग एक्शन लेगा, हर एक इंसान की क्वालिटीज अलग होगी, हर एक इंसान अलग अलग चीज़ों से अट्रैक्ट होगा, अलग अलग चीज़ें पहनेगा, लेकिन जो भाव है, सत्य है, दैट विल रिमेन द सेम. In the first chapter of the second book, Kanada deals with substances. Earth possesses color, taste, smell, touch, and touch, water, color, taste, touch, liquidity and smoothness, snigdha, fire, color and touch, air, touch. But none of these qualities can be found in ether, आकाश. यानी कि इनमें से कोई भी qualities ether नहीं होगी, आकाश नहीं होगी. Liquidity is a special quality of water because butter, lac, wax, lead, iron, silver, gold becomes liquid only when they are heated, while water is naturally liquid itself. It should be noted that mercury is not mentioned, जो कि हमने कल भी बताया था कि क्योंकि चरक के टाइम में ये mercury was not found at that time, right? या इसीलिए liquidity is a special quality of water क्योंकि butter, lac, wax, lead, iron, silver, gold becomes liquid after only after when they are heated up, right? Though air cannot be seen, yet its existence can be inferred by touch, just as the existence of genus of cows may be inferred from characteristics of horns or tails, etc. Since this thing inferred from touch possesses motion and quality and does not itself inhere in any other substance, it is a substance, dravya, and is eternal. Substance is that which possesses quality and action. It should be noted that the word adravyattvena has been interpreted as by me as adravyattvena. The inference of air is of the type of inference of imperceptible things from certain non-characteristics called samanyato drishta. The name of air, Vayu, is derived from the scriptures. The existence of others different from us has asmadvishishtanam to be admitted for accounting for the giving the names to things samgya karma, because we find that that the giving of names is already in usage and not invented by us on account of the fact that movements rest only in one thing, the phenomena that a thing can enter into any unoccupied space would not lead us to infer the existing of akasha ether. Akasha has to be admitted as the hypothetical substance in which the quality of the sound inheres. Because since sound, a quality is not the characteristic of a thing which can be touched, there must be some substance in which it is a quality. And this substance is Akasha. It is a substance and eternal like air. As being is one, so Akasha is also one. Uh, The interpretation is according to Shankar Mishra's Upaskara. ये जो डेफिनेशन है आकाश की, क्योंकि आकाश एक ही है, आकाश को हम टच नहीं कर सकते, बट वी आर इन दैट. इट इज अ सब्सटेंस एंड इटर्नल लाइक एयर, एज बीइंग इज वन सो आकाश इज आल्सो वन. तो ये जो डेफिनेशन है दैट इज बाय शंकर मिश्रा उपस्कारा. एग्जाम में ये टर्मिनोलॉजीज कहीं ना कहीं आपको अटक सकती है, ये टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान रखनी है, राइट? In the second chapter of the second book, Kanada tries to prove that smell is a special characteristic of earth, heat of fire, and coldness of water.
यानी कि these are the special characteristics of each thing. स्मेल ऑफ अर्थ, जैसे गंध जो होती, गंध हम मिट्टी से लेते हैं ना, वैसे ही फायर तो जलाएगी तो वो हीट, एंड कोल्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी शीत, अगर आप उबाले भी तो भी वो बाद में ठंडा हो जाएगा, राइट. Time is defined as that which gives the notion of youth in the young simultaneity and quickness. It is one like being. Time is the cause of non eternal things because the notion of time is absent in eternal things. The space supplies the notion that this is so far away from this and or so much nearer to this. टाइम इज समथिंग जो कि हमारे नॉन इटर्नल्स के लिए है, इटर्नल्स के लिए टाइम है ही नहीं है, बिकॉज इट इज इटर्नल, इट विल ऑलवेज बी देयर. आत्मा है, आत्मा हमेशा रहेगी, आज भी है, कल भी थी, कल भी रहेगी, आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी. लेकिन जो हमारे बॉडी है दैट इज नॉन इटर्नल, इट इज हैविंग अ टाइम. रोज टाइम निकलता है, रोज वी आर गेटिंग ओल्डर, रोज वी एवरी डे वी आर डाइंग. विद द प्रोसेस ऑफ बर्थ देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डेथ एज वेल. Time is the cause of all non eternal things because the notion of time is absent in eternal things. Space supplies the notion that this is so far away from this and so much nearer to this. Like being, it is one. One space appears to have diverse interspace relations in connection with the motion of the sun. As a preliminary to discussing the problem whether sound is eternal or not, he discusses the notion of doubt, which arises when a thing is seen in a general way, but the particular feature coming under it are not seen. Either when these are only remembered, or when some such attribute is seen which resembles some other attribute seen before, and when a thing is seen in one way but appears in another, or when what is seen is not definitely grasped whether rightly seen or not. He then discussed the question whether sound is eternal or non-eternal, and he and gives his reason to show that it is non-eternal because it concludes the discussion with the number of other reasons proving that it is eternal. यानी कि एक टाइम पे तो वो कहते हैं दैट साउंड इज नॉन इटर्नल, बट कंक्लूजन में दे आल्सो प्रूव दैट इट इज इटर्नल. सो मेनी ए टाइम्स इट मस्ट, बिकॉज इट इज लाइक कि अगर वी आर नॉन इटर्नल बट गॉड इज इटर्नल, तो अगर भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने हु इज इटर्नल उन्होंने किए, तो दोज वर्ड्स विल रिमेन फॉर एवर. सो इट इज द वर्ड्स आर आल्सो इटर्नल, बट वो वर्ड से सिर्फ सुनने से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इटर्नल है एंड वी आर हियरिंग थ्रू नॉन इटर्नल थिंग्स. The first chapter of the third book is entirely devoted to the inference of the existence of soul. Now, from the fact that there must be some substances in which knowledge produced by the contact of the senses and their object inheres. The knowledge of sense objects, indriyartha, is the reason by which we can infer the existence of something different from the senses and the object which appear in connection with them. The types of inference referred to are inference of non existence of something from the existence of something, of the existence of something from the non existence of something, of the existence of something from the existence of others. In all these cases, inference is possible only when the two are known to be connected with each other. Prasiddhi purvaka tvat apadeshasya. When such a connection does not exist or is doubtful, we have anapadesha, fallacious middle, and sandigdha, doubtful middle. जब कनेक्शन नहीं होगा तो उस केस में फॉलेशियस मिडल या डाउटफुल मिडल होगा. संदिग्ध डाउटफुल मिडल, अनपदेश फॉलेशियस मिडल. दस इट इज अ हॉर्स बिकॉज thus एक एग्जांपल है, इट इज अ हॉर्स बिकॉज इट हैज अ हॉर्न, और इट इज अ काउ बिकॉज इट हैज अ हॉर्न, आर एग्जांपल्स ऑफ फॉलेशियस रीजंस. यानी कि इसमें रीजन फॉलेशियस है कि काउ के और हॉर्स के हॉर्न नहीं होते. The inference of soul
from the cognition produced by the contact of soul, senses, and objects and is not fallacious in the above way. The inference of the existence of soul in others may be made in a similar way in which the existence of one's own soul is inferred. That is, by virtue of the existence of movement and cessation of movement. In the second chapter, it is said that the fact that there is cognition only when there is contact between the self, the senses, and the objects proves that there is manas, mind, and the mind is a substance and eternal, and this can be proved because there is no simultaneity of production of efforts and various kind of cognitions. It may also be inferred that this manas is one with each person. The soul may be inferred from inhalation, exhalation, twinkling of the eyes, life, the movement of the mind, the sense, affection, pleasure, pain, will, antipathy, and effort. That it is a substance and eternal can be proved after the manner of Vayu. An objector is supposed to say that since when I see a man, I do not see his soul. The inference of the soul is of the type of samanyato drishta inference, that is from the perceived sign of pleasure, pain, cognition, or to infer an unknown entity to which they belong, but that this was self could not be affirmed. So the existence of soul has to be admitted on the strength of the scriptures. But the Vaisesika reply is that since there is nothing else but self to which the expression I may be applied, there is no need of falling back on the scriptures for the existence of the soul. But then it is said that if the self is directly perceived in such experience as I am Yagyadatta or I am a Devadatta, what is good of turning into inference? The reply is that, or to this is that inference lending its aid to the same existence only strengthens the conviction. When we say that Devadatta goes or Yagyadatta goes, there comes the doubt whether by Devadatta or Yagyadatta the body alone is meant, but the doubt is removed when we think that the notion of I refers to the self and not the anything else. As there is no difference regarding the production of pleasure, pain, and cognition, the soul is one in all, but yet it is many by special limitations as individuals, and this is also proved on the strength of scriptures. I have differed here from the meaning given in Upaskara. I think the three sutras, Sukha Dukha Jnana Ishpati Vishesha Dekatamyam Vyavasthato Nana and Shastra Samarthyat Cha originally meant that the self was one, though for the sake of many limitations and also because of the need of performance of act enjoining by the scriptures, they are regarded as many. I have differed here also in my meaning from the Upaskara, which regards Sutra Vidya to mean that we do not know any reason which lead to non-eternal of the atoms. In the first chapter of the fourth book, it is said, ये कनादा ऋषि की ही बुक की बात हो रही है शायद. In the first chapter of the fourth book, it is said that which is existent but yet has no cause should be considered eternal, nitya. It can be inferred by its effect, for the effect can only take place because of the cause. When we speak of anything as non eternal, it is only a negation of the eternal, so that also provides that there is something eternal. The non eternal is ignorance, avidya. Color is visible in a thing which is great, mahat, and compound. Air, vayu, is not perceived to have color, though it is great and made up of parts, because it is not the actuality of colors, rupa samskara.
That is, in air there is only color in its unmanifested form. In it, color is thus visible only when there is color with special qualifications and conditions. In this way, the cognition of taste, smell, and touch is also explained. Number, measure, separateness, contact, and disjoining, the quality of belonging to higher or lower class, action, all these as they abide in things possessing color are visible to the eye. The number, etc., of those who have no color are not perceived by the eye. By notion of being and also of genus of quality, gunatva, are perceived by all the senses, just as color, taste, smell, touch, and sound are perceived by one sense. Cognition, pleasure, pain, etc., by the manas, and number, etc., by visual and the tactile sense. यानी कि जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं वो रूप संस्कार, एनीथिंग विच इज परसीव्ड, कलर, टेस्ट, स्मेल, टच, etc., right? These are done by the sense organs, and the things which are in the limit of those senses. हम साउंड भी किसी एक लिमिट में सुन सकते हैं, राइट? लिमिट के पार वी वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट. In the second chapter of the fourth book, it is said that earth, that is, exists in three forms: body, sense, and object. There cannot be any compound of the five elements or even of the three, but the atom of different elements may combine when one of them act as a central radical, upastamba. Bodies are of two kinds: those produced from ovaries and those which are otherwise produced by the combination of atoms in accordance with the special kind of dharma. यानी कि कुछ बॉडीज ओवरीज से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे मतलब कि और जो जीव जंतु जन्म लेते हैं, या फिर combination of atoms due to special kinds of dharma. There are certain animals, mammal species which are produced by them. Such supermundane bodies are to be admitted for explaining the fact that there must have been they must have things must have been given names by beings having such supermundane bodies, and also on account of authority of Vedas. यानी कि वेदास के अकॉर्डिंग भी इनके डिफरेंट नेम्स अवेलेबल हैं. In the first chapter of the fifth book, action, karma, is discussed. तो फर्स्ट चैप्टर फिफ्थ बुक में कर्म, यानी कि एक्शन को डिस्कस किया गया है. टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ थ्रेशिंग द कॉर्न, it is said that the movement of hand is due to its contact with the soul in a state of effort, and the movement of the flail is due to its contact with the hand. But in the case of the uprising of the flail and in the threshing pot, uh, due to impact, the movement is not due to contact but with the hands, and so the uplifting of the hand in touching with the flail is not due to its contact with the soul, for it is due to the impact of the flail. On account of heaviness, Gurutva, the flail will fall when not held by the hand. Things may have an upward or side motion by specially directed motions, Noda Navishesha, which are generated by special kinds of efforts. Even without effort, the body may move during sleep. The movement of needles towards magnets is due to an unknown cause, Adrishtakarnaka. The arrow first acquires motion by specially directed movement, and then, on account of its inertia, Vega Samskara keeps on moving, and when that ceases, it falls down through heaviness. The second chapter bounds with extreme crude explanation of certain physical phenomena which has no philosophical importance. All the special phenomena of nature are explained as being due to unknown causes, karyatam, and no explanation is given as to the nature of unknown, adrishta. It is, however, said that the absence of adrishta, there is no contact of body with soul, and there is no rebirth, and therefore moksha, salvation, pleasure and pain are due to contact of the self, manas, senses, and objects. Yoga is that which the mind is in contact with the self alone, by which the former becomes steady and there is no pain in the body.
Time, space, akasha are regarded as inactive. The whole of the sixth book is devoted to showing that gifts are made of proper persons, not through sympathy, but an account of injunctions of the scriptures and the enumeration of certain Vedic performances, which bring the indrishta purification and impurities of things. How passions are often generated by drishta, how dharma and adharma led to birth and death, and how moksha takes place as a result of work of the soul. In the seventh book, it is said that equalities or in eternal things are eternal, and in non-eternal things non-eternal. The change of qualities produced by heat in earth has its beginning in its cause, the atoms. Atomic size is invisible while great size is visible. Visibility is due to things being made up of many causes. I have differed from the Upaskara in the interpretation of this सूत्र. यानी कि इस केस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है कि जो हम चीज़ नहीं देख पाते हैं उसके कुछ और कॉजेज भी हो सकते हैं, क्या पता वो इतनी छोटी हो कि हम देख ना पाए, क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं वो एक लिमिट तक काम करते हैं, चाहे ज़्यादा बड़ा हो चाहे ज़्यादा छोटा हो, चाहे सूक्ष्म हो, वो सारी चीज़ें हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो नहीं देख पाते हैं. Atomic sizes is invisible, while great sizes in the cause the atoms. Atomic sizes is invisible, while the great sizes is visible. Visibility is due to things made up of many causes, but the atoms is therefore different from those have great size. The same thing may be called great and small relatively at the same time. In accordance with Anutva, atomic, and Mahatva, great, there are also the notions of big and small and big. The eternal size of Parimandala, round, belongs to the atoms. Akash and atom are called Mahan or Parama Mahan, the supreme great of all pervasive. Since Manas is not the great measure, it is of atomic size. Space and time are also considered as great, as being of the measure, supreme great, Parama Mahat. Atomic size, Parimandala, belonging to the atom and the mind, manas, and the supreme great size belonging to the space, time, soul, and ether, akash, is regarded as eternal. यानी कि supreme great Padma Mahat is known as eternal. In the second chapter of the seventh book, it is said that unity and separateness are to be admitted as entities distinct from other qualities. There is no number in movement and quality. The appearance of number is in them is false. Cause and effect are neither one, nor have they distinct separateness. Ek prathakatva. The notion of unity is the cause of the notion of duality, etc. Contact may be due to action of one or two things, or the effect of another contact, and so is disjoining. There is neither contact nor disjoining in cause and effect, since they do not exist independently. Yutasidhya bhavat. In the eighth book, it is said that soul and manas are not perceptible, and that in the apprehension of qualities, action, generality, and particularity, perception is due to their contact with the thing. Earth is the cause of perception of smell, and water, fire, and air uh, are the cause of taste, color, and touch. In the ninth book, negation is described. Non-existence, asat, is defined as that to which neither action nor quality can be attributed. Even existent things may become non-existent, and that which is existent is one way in one way may be non-existent in another. But there is another kind of non-existence which is different from the above kinds of existence and non-existence. In the previous three kinds of non-existence, pragbhava, negation before production, dhvamsambhav, negation after destruction, and anyonya bhava, mutual negation of each other in each other, has been described. The fourth one is samanya bhava, general negation, यानी कि general negation है, right?
All negations can be directly perceived through the help of memory, which keeps before the mind what the thing to which the negation applies. Illusion is also made in the connection of special perceptual powers of the yogins. Sages attaining mystical powers through yoga practices. In the second chapter, the nature of hetu, reason, or the middle term is described. It is said that anything connected with any other thing, as effect cause, as in contact, or as contrary, or as inseparable, connected, will serve as linga, reason. The main point is the notion. This is associated with this, or these two are related as cause and effect. And since this may also be produced through premises, there may be a formal syllogism from proposition fulfilling the above conditions. Verbal cognition comes without reference. False knowledge, avidya, is due to the defect of the senses, or non-observation or mal-observation due to wrong expectant impressions. यानी कि हमारे एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और हो कुछ जाता है. The opposite of the true knowledge, vidya, ये अविद्या है, false knowledge. In the tenth it is said that pleasure and pain are not cognition, since they are not related to doubt and certainty. इसे हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको, क्योंकि हमें ये पूरा डिटेल में जानना है. उसके बाद हम कल न्याय सूत्रास को डिफाइन करेंगे, राइट. द द्रव्य may be caused by the inhering of the effect in it. For because of its contact with another thing, the effect is produced. Karma, motion, is also the cause, since it inheres in the cause. Contact is also a cause, since it inheres in the cause. A contact which inheres in the cause of the cause and therefore helps the production of the effect is called the cause, is also a cause. The special quality of the heat of fire is also a cause. Works according to the injunction of scripture, since they have no visible effect, are the cause of prosperity, and because the Vedas direct them, they are the validity. इसको हम पढ़ते हैं दोबारा से. There is neither contact nor disjoining is cause in cause and effect. यानी कि कोई contact और disjoining नहीं होती in cause and effect, since they do not exist independently. युत सिद्ध्य भवत. इसमें ये बोला गया है कि अगर दही है, दूध से दही बन रहा है, तो दूध और दही अलग अलग थोड़ी है, कॉज और इफेक्ट तो उसी में है. दैट इज व्हाट वी हैव एक्सप्लेन बिफोर. वैसे ही they are neither disjoint nor joining, they are just inherent in each other, right? Contact, not disjoining, is the cause and effect, right? In the eighth book, it is said that soul and manas are not perceptible, and that it is apprehension of qualities, action, generality, and particularity perception is due to the contact of their things. यानी कि मनस और सोल परसेप्टेबल नहीं, आप उसे परसीव नहीं कर सकते हो, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज है, एक्शन है, जनरलिटी एंड पर्टिकुलरिटी है, इज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द थिंग्स. यानी कि जिस चीजों से वो कॉन्टैक्ट करती हैं वैसे उसके अकॉर्डिंग होता है, राइट. Earth is the cause of the perception of smell and water. Fire and air are the cause of taste, color and touch. अर्थ जो है वो परसेप्शन स्मेल के रिस्पॉन्सिबल है. वाटर इज फॉर द टेस्ट, फायर इज फॉर कलर एंड एयर इज फॉर टच. आप कोई चीज जलाते हो तो अलग अलग फ्लेम्स निकलती हैं, तो कलर का जो उत्सर्जन है वो उसी से बनता है ना. अगर आप कोई चीज जलाओगे, कोई चीज बर्न हो रही है, वो उसी से कलर आएगा, राइट. तो दैट इज हाउ इट इज बीइंग देयर. Upaskara here explains that it is intended that the senses are produced by those specific elements, but this cannot be found in the sutras, right. In the ninth book, negation is described. Ninth book of Kannada, negation is described. इसमें बहुत सवाल आते हैं, इसलिए मैं इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं. नॉन एग्जिस्टेंस, असत, is defined as that which neither action nor quality can be attributed. यानी कि ना उसका एक्शन ना उसकी क्वालिटी एट्रीब्यूट की जा सकती, दैट इज असत.
Even existent things may become non-existent, and that which is existent in one way may be non-existent in another. यानी कि जो एग्जिस्टेंट जो अभी चीजें हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट हो सकती है, जैसे आज मैं हूं जिंदा, कल नहीं हूं, कल राख बन जाऊंगा। वैसे ही एक चीज अगर एक काइंड पे नॉन एग्जिस्टेंट है एक टाइम पे, जैसे राख अभी एग्जिस्टेंस नहीं है, which is different from the above kind, is existent and non-existence is a non-existent in another। यानी कि अगर राख नहीं है लेकिन इंसान तो है, तो आई एम नॉन एग्जिस्टेंट एज अ राख अभी, बट प्रोबेबली आगे जाके राख बन जाऊँ। वैसे ही कोई फोन को भी लेते हैं, फोन अभी है, अभी बिल्कुल लाइव चल रहा है, सब सही चल रहा है, लेकिन आगे जाके क्या पता हो कबाड़ के ढेर में अलग अलग पीसेस में टुकड़ों में पड़ा हो, राइट। But there is another kind of non-existence which is different from the above kind of existence and non-existence। इसका मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक तो है नेगेशन बिफोर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोड्यूस होने से पहले नहीं है, डिस्ट्रॉय होने के बाद नहीं है, और म्यूचुअल नेगेशन यानी कि ऑफ ईच अदर इन ईच अदर, यानी कि उसके अंदर अभी वो नहीं है, राइट। द फोर्थ वन इज साइमल्टेनियस नेगेशन, यानी कि जनरल नेगेशन के वो नहीं है, दैट इज नॉट देयर, राइट। तो ये काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस बताए गए हैं इन द नाइन्थ बुक। ऑल नेगेशंस कैन बी डायरेक्टली परसीव्ड थ्रू द हेल्प ऑफ मेमोरी which keeps before mind the thing to which the negation applies। यानी कि वो जो negation है that is there in the memory, तभी तो हम बोल पा रहे हैं अच्छा ये अभी है कल नहीं है, अभी ये है और कल नहीं है और कल नहीं होगा, राइट, पहले भी नहीं था, राइट। तो ये नेगेशन जो है ये हमारे ब्रेन से निकली हुई चीजें हैं, विच इज द मेमोरी दैट वी हैव, राइट। Illusion is also made in this connection to the special perceptual powers of the yogins। Illusion is also made in connection with special powers of the yogins, sages attaining mystical powers through yoga practices। तो उसके ऊपर भी illusion हो सकता है, right। In the second chapter, the nature of hetu, reason in the middle term is described, or the middle term। तो middle term कई बार आप confused हो जाते हो। Many times in IKS you get confused with the middle term। Middle term is the hetu, reason। Reason क्या है? Term is described। It is said that anything connected with any other thing as effect, cause, as in contact, or as contrary, or as inseparable connected will serve as लिंग, रीजन। लिंग को भी रीजन बताया गया है, यानी कि एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू अ थिंग, इफेक्ट है, कॉज है, कॉन्टैक्ट है, और कॉन्ट्ररी और इनसेपरेबल कनेक्टेड है, तो दैट इज कॉल्ड रीजन, दैट इज inseparably connected as well, right। The main point is the notion this is associated with this, or these two are related as cause and effect। And since this may also be produced through premises, there may be a formal syllogism for propositions fulfilling the above conditions। verbal cognition comes without inference, यानी कि verbal cognition होगा वो बिना inference के ही आएगा। false knowledge avidya is due to defect of the senses। अविद्या जो होगी वो defect of the senses से ही बनेगी। or non-observation and mal-observation due to wrong expectant impressions। Non-observation and mal-observation is due to wrong expectant impressions। The opposite of this is true knowledge, avidya। विद्या, इसके ऑपोजिट जो होगा अविद्या, फॉल्स नॉलेज अविद्या हो गया ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ द सेंसेस, यानी कि हम कुछ गलत देख पा रहे हैं, हम दूर की दृष्टि नहीं देख पा रहे हैं, या कुछ गलत ही देख लिया। हम देख कुछ रहे हैं और हो कुछ अलग रहा है। तो मेनी टाइम्स हम दूर से कुछ देखते हैं एंड इट इज नॉट विजिबल। हम कई बार कुछ गलत चीजें भी देख लेते हैं, जैसे पॉन्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। इट उसके दुर्गामी परिणाम होते हैं, राइट। उसके ऑपोजिट है विद्या, यानी कि जितनी भी हम मूवीज देखते हैं वो भी तो गलत ही हैं। दे आर मेकिंग अस अवे फ्रॉम आवर नॉलेज। जितनी भी मूवीज मैक्सिमम जो भी आप देखेंगे, मैंने जब भगवत गीता का 47th वर्स ऑफ सेकंड चैप्टर पढ़ रहा था, सत्कर्णीय वादिका रस्ते वाला, तो उसमें पूरा श्लोक तो वो बोलते ही नहीं है मूवी में। दैट इज व्हाई आई डिडंट रिमेंबर कि अच्छा ये पार्ट भी है, राइट। In the 10th, in the
the opposite of this is true knowledge, that is vidya. यानी कि जो हम ट्रू नॉलेज अभी ले रहे हैं, दैट इज द विद्या. In the 10th it is said, in the 10th book of Kanada, it is said that pleasure and pain are not cognitions, since they are not related to doubt and certainty. यानी कि pleasure and pain are not cognition, since it is related to doubt and uncertainty. डाउट और अनसर्टेनिटी पे होता है प्लेजर एंड पेन. क्या हमेशा प्लेजर तो नहीं रहेगा, हमेशा पेन भी नहीं रहेगा. पेन का भी अंत होगा और प्लेजर का भी अंत होगा. सो इट इज डाउट एंड अनसर्टेनिटी. डाउट इसलिए कि आपको ये नहीं पता कि पेन कब खत्म होगा और प्लेजर कब खत्म होगा. In the 10th, it is said that pleasure and pain are not cognitions, since they are not related to doubt and certainty. तो uncertain ही है ना, अनसर्टेन है कि कब होगा कब नहीं होगा, हमें अपने कर्म तो पता नहीं है. A dravya may be caused by the inhering of the effect in it. A dravya may be caused by the inhering of the effect in it, for because of its contact with another thing, the effect is produced. A dravya may be caused by inhering in of the effect in it, for because of its contact with another thing, the effect is produced. Karma, motion, is also a cause since it inheres in the cause. Contact is also a cause since it inheres in the cause. A contact which inheres in the cause of the cause in the cause. यानी कि कॉन्टैक्ट रहेगा तभी तो इट्स अ कॉज, इट इनहर्स इन द कॉज, राइट. ए कॉन्टैक्ट व्हिच इनहर्स इन द कॉज ऑफ द कॉज एंड देयरबाय हेल्प्स द प्रोडक्शन ऑफ द इफेक्ट इज आल्सो द कॉज. यानी कि उसके बाद अगर आपने टच किया या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट होता है उसके बाद कोई कॉज होगा तो दैट इज आल्सो द कॉज. द स्पेशल क्वालिटी ऑफ हीट of the heat of fire is also a cause. यानी कि heat of fire जो गर्मी है आग की, that is also the cause. Works according to the injunction of scriptures, since they have no visible effect, are the cause of prosperity, and because Vedas direct them, they have validity. Right. ये था आज का वैशेषिका फिलॉसफी. हम कल फिलॉसफी ऑफ न्याय सूत्रास पढ़ेंगे, which is long. हम फिर वैशेषिका न्याय लिटरेचर भी पढ़ेंगे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, राइट. आई होप आपको आज का लाइव पसंद आया होगा. आई एम सॉरी कल मैं मूड में नहीं था, पता नहीं क्यों, आई वाज नॉट फीलिंग वेल. तो होते हैं, दे आर गुड एंड बैड डेज. आप बताएं लाइव कैसा चल रहा है. देयर वुड बी डेज इन विच आई विल बी ट्रैवलिंग. आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि उन दिन भी मैं लाइव कर पाऊँ द वे आई एम डूइंग इट राइट नाउ. लाइटिंग का कुछ इफेक्ट आ सकता है, बट स्टिल आई ट्राई माय लेवल बेस्ट that I continue this spree of 7 to 8 lectures every morning. So I'll see you guys in the next video, probably tomorrow. अगर नहीं होगा तो probably टाइम थोड़ा बदल सकता है या लोकेशन थोड़ी बदल सकती है, you don't know कल क्या हो. तो आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ जुड़े रहिए, अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए. मैं मिलूंगा आपको कल. तब तक के लिए जय श्री राम. ये सुना नहीं होगा आपको. तब तक के लिए जय श्री राम. कल मिलते हैं.